नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो तारीख है वो है 12 अक्टूबर 2020। ओके। और आज से मैंने कुछ नया शुरू किया है क्योंकि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट और चूंकि और भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, तो मैं क्या करूँगा कि सारे चैप्टर्स को मैं बारीकी से लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा आपके लिए। आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि इस चैप्टर में क्या बताया गया, कैसे डिटेल्स हैं, और उनको हम डिटेल में इसको देखेंगे। तो ये है चैप्टर 6, लाइफ प्रोसेस। ओके। ये है हाइलाइटर। इज इट वर्किंग? नो, इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली। या इट्स वर्किंग एनीवे। तो यहाँ पे पेन भी है, तो हम पेन ले लेते हैं। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट डू द सेटिंग्स, और उसके बाद मे बी I don't need the signature. What is this? let me just sticky notes भी नहीं, बस मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ फ्रेंड्स। ओके। वो टूल्स में क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? एनीवे, हमें ये नहीं चाहिए। चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं, कैंसिल इट ऑफ। बस लेट्स ट्राई टू बिगिन, और बाकी सेटिंग्स हम बाद में कर लेंगे एज यू नो। ओके। एक सेकंड में देख लूँ। चलिए, तो शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस। ओके। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये मैं बता दूं कि ये बायोलॉजी सेक्शन में आता है। बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी? बेसिकली बायोलॉजी है क्या? इट इज स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु के बारे में जो स्टडी करते हैं विज्ञान के उस शाखा में, उसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। कूल। तो ये है चैप्टर 6 यहाँ पे। ओके। वेट, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, हाईलाइटर। या तो ये चैप्टर 6, इसका नाम है लाइफ प्रोसेस। प्रोसेस यानी जीवन जीने के लिए जो प्रक्रियाएं, जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं अपने लाइफ में, उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। इट इज वेरी सिंपल। ओके। चलिए, तो हम शुरू करते हैं, रीड करेंगे, फिर अंडरस्टैंड करेंगे ये है क्या। फाइन। सो हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट alive? If we see a long running or a cow chewing or a man shouting loudly on the street, we know that these are the living beings. What if the dog or the cow or the man were asleep? अगर वो सो रहे हैं तो क्या होगा? We would still think that they would were alive. फिर भी हम सोचेंगे वो जिंदा है। But how did we know that? हमें ये कैसे पता चला कि वो जिंदा है? We see them breathing. हम उन्हें देखते हैं कि वो सांस लेते हैं, वैसे ही रामदेव बाबा करते हैं, बट दिस इज हाउ दे ब्रीथ, एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, और हमें ये पता चलता है कि वो जिंदा है। व्हाट अबाउट प्लांट्स? अगर हम यही बात करें पौधों के बारे में कि वो जिंदा है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? ये कैसे पता चलेगा कि प्लांट्स भी जिंदा हैं? वी सी देम ग्रीन, हम उन्हें देखते हैं और पाते हैं कि वो ग्रीन है, यानी हरे रंग के होते हैं। आपको बता दूं कि हरा जो है वो एक कंपोनेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे कंपोनेंट की वजह से प्लांट की जो कलर होती है पत्तियों की, वो ग्रीन होती है। सम ऑफ अस विल से, हमारे में से कुछ कहेंगे, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन? पर वैसे पेड़ों का क्या जिनके कलर ग्रीन से दूसरे हैं, यानी पेल कलर के हैं, येलो कलर के हैं, उनका क्या? क्या वो जिंदा है? यस, दे ग्रो ओवर टाइम, वो समय के साथ बढ़ते हैं। सो वी नो दैट दे आर अलाइव, और इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जिंदा है। तो हमने दो प्रॉपर्टी देखी, उनमें ग्रोथ होता है, वो ब्रीदिंग करते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। Some will say, in other words, we tend to think some sort of movement, either growth related or not, as common evidence of being alive। यानी growth एक क्या है, लाइव होने का एक एविडेंस है, एक साक्ष्य है, एक प्रूफ है। ओके। बट प्लांट्स दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग, इट्स स्टिल अलाइव। लेकिन वैसे पौधे जो ग्रो नहीं कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी जिंदा है। प्लांट्स में ग्रोथ स्लोली होता है, लेकिन उसके बावजूद वो जिंदा है। क्यों? हम अपने नेकेड आई से उसे देख नहीं सकते, अपनी नग्न आंखों से उसे देख नहीं सकते। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, और कुछ जो एनिमल्स हैं वो बिना मूवमेंट, मतलब दिखाई दिए मूवमेंट के भी वो ब्रीथ करते हैं। सो
Using visible movement as the defining characteristics of life is not enough. यानी अगर movement ही लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करता है तो ये पॉसिबल नहीं. मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आइज. बहुत छोटे स्तर पे अगर ग्रोथ हो रहा है तो वो आंखों को नहीं दिखेगा, नग्न आंखों को नहीं दिखेगा. Movements of molecules, for example, is this invisible molecule movement necessary for life? तो क्या लाइफ के लिए ये मूवमेंट या जो ग्रोथ कह लीजिए क्या जरूरी है? तो देखते हैं. If we ask this question to the professional biologist, अगर हम इस क्वेश्चन को प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल किसको कहते हैं जो कि अपने पैशन को पैसे के लिए काम करते हैं, दे अर्न मनी आउट ऑफ द टैलेंट दे हैव. दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म बेसिकली. So they will say yes. In fact, virus do not show any movement in them until they infect some cell. I'm sorry. तो वायरस भी मूवमेंट नहीं दिखाते जब तक कि वो किसी और सेल में इंटर ना कर जाए. ओके, तो ये है. एंड that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. तो इसलिए कि हमेशा इस बारे में चर्चा का विषय रहा है कि वायरस वायरस अगर इसको कह लीजिए इन अदर टर्म्स तो वो जिंदा है या नहीं होते हैं. Why the molecular movement needed for life? Molecular movement life के लिए क्यों जरूरी है? We have seen in an earlier class that living organism were all well organized structure. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड सही तरीके से संरचनात्मक जो उनकी ढांचा है वो बहुत सही तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है, बनाई गई है. They can have tissues have cells have a smaller component in them. तो उसमें टिश्यूज होता है, टिश्यू में सेल्स होता है और सेल के भी स्मॉलर कंपोनेंट्स यानी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. एंड सो ऑन. बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड. तो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के प्रभाव के कारण ये जो संरचना होती है ऑर्गेनाइज्ड होती है. Ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. So living creatures must keep repairing and maintaining the structure. Since all the structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. What are the maintenance process in living organism? तो जो हमारी बॉडी बहुत एकदम बृहद संरचना से घिरी हुई है, अब उसको मेंटेन करने के लिए एक जो प्रोसेस चाहिए उसको कहते हैं रिपेयर. अब रिपेयर किसको कहते हैं? सपोज हमारे हाथ में कट लग जाती है, ब्लड निकलता है, तो क्या करता है? विटामिन के जो ब्लड क्लॉटिंग को हेल्प करता है वो उसको जो क्लॉट होने से ब्लड का फ्लो रुक जाता है और इंसान बच जाता है, वो आगे फर्दर डैमेज उसको नहीं होता है. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया रिपेयर का. तो और ऐसे क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उसको रखने के लिए इंसान क्या करता है या ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे. सो व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? तो अभी मैंने अभी तक डिटेल में देखा कि लाइफ प्रोसेस क्या है, जिंदगी क्या है. हम कैसे पता करेंगे कि कोई इंसान जीवित है कि नहीं है? तो बेसिकली इसको पता करने का ये है कि आप उनमें अगर ग्रोथ हो रहा है, अगर ब्रीदिंग हो रही है, कोई मूवमेंट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये जीवित है. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, ऑल्दो वो मूवमेंट नहीं करते पर हम ये चेक करते हैं कि उनमें ग्रीन कलर की पत्तियां हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये प्लांट अलाइव है. ठीक है. अब हम मेंटेनेंस के बारे में कुछ आगे देखेंगे, रिपेयर के बारे में और देखेंगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है डेफिनेशन वाटर लाइफ प्रोसेस. The maintenance functioning of a living organism must go on even when they are not doing anything particular, even when we are just sitting in. तो मेंटेनिंग फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमेशा चलते रहना चाहिए, जब भी वो कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी, जब हम बैठे हैं तो भी. तो ये बहुत सारी फंक्शंस फॉर्म करते हैं. Second class. Even if we just asleep, this maintenance job has to go on. The process which together perform this maintenance job are life process. यानी हम कुछ करें या ना करें पर जिंदा रखने के लिए बहुत सारी अंदर में एक्टिविटीज चलती रहती हैं. इन सारे प्रोसेस को एक साथ मिला दे तो ये कहा जाता है लाइफ प्रोसेस. Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. This energy comes from outside of the body of the individual organism. So there must be a process to transfer a source of energy from outside of the body of the organism which we call food. यानी सारी एक्टिविटीज को फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी. और एनर्जी कहाँ से मिलता है? फूड से, खाना से, भोजन से. टू द इनसाइड अ प्रोसेस विच कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन. एक प्रोसेस की बदौलत जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन. ठीक है. एक सेकेंड मैं जरा 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 सा 1 second checking it out. क्या हो रहा है? No, I don't need this. I'm so sorry for this. No, 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 no.
I just wanted a highlighter, nothing else. What tool is this? Edit text and images. I don't want to edit, I just want to use, Anyway, शुरू करते हैं. Okay. If the body size of the organism is to grow, additionally, raw materials will be also needed for ourselves. Since life on the earth depends upon carbon-based molecules, most of these food sources are also carbon-based, depending upon the complexity of their carbon sources. Different organism can then use different kinds of nutrition process. तो मोस्टली जो वर्ल्ड में है वो कार्बन प्रोसेस से बने होते हैं, कार्बन मॉलिक्यूल से बने होते हैं, बेसिक कंपोनेंट होता है. तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से. अब फूड को प्रॉपरली एक न्यूट्रिशन चाहिए होता है. न्यूट्रिशन हमें भोजन से मिलता है. ठीक है. तो बहुत सारे जो हैवी या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बॉडी है तो उनके अंदर बहुत सारी मैकेनिज्म चलती है जिसके कारण ओवरऑल लाइफ प्रोसेस को मेंटेन कर पाता है, बैलेंस कर पाता है. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. The outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining living structure as well as the kind of molecules the body needs to grow. For this, a series of chemical reactions in the body are necessary. Oxidizing, reducing reactions are some of the most common chemical means to break down these molecules. For this, many organisms use oxygen sourced from outside the body. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breaking down food source for cell needs is what we call respiration. हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है सर्वाइवल के लिए. तो जब हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिडक्शन इज रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन होता है. तो इस प्रोसेस में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसकी पड़ती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ही हेल्प करता है जो मॉलिक्यूल्स हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में. तो डाइजेशन के लिए और सबसे पहले हमें जिंदा रहने के लिए एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन क्या है? वो ऐसा प्रोसेस जिसपे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हम सर्वाइवल के लिए अपनी ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल करते हैं. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या कह रहा है. In this case of a single cell organism, not specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste will be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. But what happens when the body size of the organism increased and the body design becomes more complex? In multicellular organism, all the cells may not be in direct contact with the surroundings environment. That simple diffusion will not meet the requirement of the cells. यानी जो छोटे सेल्स के ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा ले लो, प्रोटोजोआ ले लो या छोटे जो भी बैक्टीरिया होते हैं, उनकी पूरी बॉडी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होती है. तो इससे क्या है? डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है और उनको आराम से सारी जो प्रक्रिया है लाइफ प्रोसेस की वो कर सकते हैं. लेकिन जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे एनिमल्स, डॉग्स, ह्यूमन बीइंग, तो उनकी जो बॉडी होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं होते एनवायरनमेंट के. सारी पार्ट्स उनके कांटेक्ट, फॉर एग्जांपल किडनी हमारी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एनवायरनमेंट के. ये क्या है? किडनी हमारे अंदर है, बॉडी के अंदर है. सिर्फ हमारा स्किन जो है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई को ये अकोमोडेट नहीं कर पाता है. That is why diffusion process does not take place in a multicellular organism. It just takes place in a single cellular organism. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. We have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the function they perform. We are familiar with the idea of these as specialized tissues and with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of a specialized tissue. However, this process is a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them. The situation creates a need for the transportation system of carrying food and oxygen from one place to another in the body. अब चूंकि हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में बना हुआ है, तो इसलिए सारी जो फूड है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी बॉडी में नीड होती है. तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसको कहते हैं जहाँ पे द बॉडी नीड्स a proper channel to transport food and oxygen from all the parts from one part of the body to other part of the body. इसको हम कहेंगे transportation system. When chemical reactions use the carbon resource and oxygen for energy generation, they create byproducts that are not useless for the cells of the body but could even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion.
अगेन द बेसिक रूल फॉर बॉडी, कहने का मतलब जब हम खाते हैं तो डाइजेशन के बाद बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं जो कि बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि उनको बॉडी बाहर निकाल दे, एक्सक्रिएट कर दे, बाई प्रोडक्ट को फेंक दे। तो इस चीज में पूरी बॉडी में एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है एक्सक्रिएशन, हिंदी में इसको कहते हैं उत्सर्जन। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। Design in a multicellular organism are followed. A specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from the cells to this excretory tissue. तो excretory टिश्यू की जरूरत होती है और वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन, व्हाई इज द डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirement of a multicellular organism like humans? This is because this is because जो ह्यूमंस में होते हैं उसमें पूरी सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है, इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई को मीट नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? कोई चीज जिंदा है कि नहीं, इस चीज को हम करने के लिए क्या क्राइटेरिया, तो हमने पहले ही पैराग्राफ में देखा था। कुछ कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई में वो अलाइव है कि नहीं। फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग हो गया, मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, है ना। तो ये हम लिखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म? तो आउटसाइड मटेरियल जैसे ऑक्सीजन हो गई, फूड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो ये सारी आउटसाइड मटेरियल्स हम कह लेंगे। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ के लिए? भैया कुछ कुछ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने देखा रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो ये कुछ कुछ प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 6.2 पार्ट देखते हैं, न्यूट्रिशन। So when we walk or ride a bicycle, we are using up energy, even when we are not doing any apparent activity. Energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. The source of energy and materials of the food is used. न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, जब हम चलते हैं या साइकिल चलाते हैं या बैठे भी हैं, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो इसमें काफी सारा एनर्जी लग रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कहाँ से आता है? इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द फूड। सो द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज द फूड दैट वी ईट। फूड में क्या खा सकते हैं? केला खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं। अब जो नॉन वेजिटेरियन, वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं मोस्टली वेज आइटम्स प्रेफर करता हूँ। स्पिनच हो गए, पालक हो गया। जो नॉन वेजिटेरियन है वो मीट, मांस, चिकन, अंडा ये सब खा सकते हैं, तो इससे न्यूट्रिशन आता है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? अब लिविंग थिंग्स को फूड कैसे मिलता है, चलिए देखते हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल organism, but it fulfilled in different way. Some organisms use simple food material obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water. These organism is autotroph. The autotrophs includes green plant and some bacteria. Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organism use biocatalyst called engine. Thus, the heterotroph survival depends directly or individually on autotrophs. Heterotrophic organism includes animals and fungi. ठीक है, तो वैसे लोग जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में। ऑटो मतलब होता है स्वतः, खुद से, है ना। जैसे ऑटोमोबाइल कहते हैं, ऑटोमेटिक मशीन गन कहते हैं, इसमें क्या करता है? ऑटोमेटिकली काम करता है। तो वैसे ही खाना खुद ब खुद बनता है नेचर से। ओके, अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। So, carbon and energy requirements of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis. It is the process by which autotrophs take in substance from the outside to convert them into stored form of energy. This material taken in form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates are utilized for providing energy up to the plant. We'll study how this takes place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which serves as internal energy reserve to be used as land when required by the plant. A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from food we eat is stored in our body in the form of glycogen. ये पूरे इस हिस्से में ये कहा गया है कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो खुद अपना खाना बनाते हैं। ओके, दे मेक देयर फूड देयर ओन, फर्स्ट थिंग। दूसरा, फूड 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 इट्स सो फनी बट नॉट ओके।
तो ये खाना खुद बनाते हैं कैसे? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब फोटोसिंथेसिस इस टर्म है, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसाइज मतलब प्रोड्यूस करना, बनाना, ठीक है। तो वैसी प्रोसेस जिसमें हम सॉरी प्लांट्स जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, सिंपल। वैसे आगे हम और डिटेल में देखेंगे। एक और यहाँ पे दो टर्म है, ग्लाइकोजन जेन और स्टार्च। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो बच जाती है, वो ह्यूमन बॉडी या ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, और प्लांट में यही चीज स्टार्च के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, स्टार्च। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लो भैया, तो यहाँ पे आ गया बच्चों, देखो ये डायरेक्टली एक इक्वेशन दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 CO2, अब CO2 कहाँ से मिलता है? एनवायरमेंट से। +12 H2O, H2O कहाँ मिलता है? वो रूट से खींचता है नीचे पानी की तरफ, बीच में यहाँ प्रेजेंस है क्लोरोफिल और सनलाइट, ये बनाता है C6H12O6 जिसको ग्लूकोज कहते हैं, +6H2O, तो ये हो गया वाटर। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे डिटेल में। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग, तो तीन चीजें प्रोसेस होते हैं। पहला क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये तीन बेसिकली प्रोसेस मिलके बनाता है फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट प्रोसेस। These steps need not to be taken place one after the another immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night, and in the presence of intermediate which is acted upon by energy absorbed by the chlorophyll during the day. Let us now see how each of the components of the life reaction are necessary for the photosynthesis. If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organized called chloroplast, which contains chlorophyll. Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैग्नीफाइंग ग्लास से डिटेल में देखा गया है तो लीव्स को इस तरीके से पाया गया है। हाउ इंटरेस्टिंग दिस इज, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, यहाँ पे फ्लोएम है, जाइलम है, वेस्टर विंडल है, इसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं, ये है लोअर एपिडर्मिस, यहाँ गाज सेल, ये एयर स्पेस बीच में जो है पत्तियों के बीच में, ये फ्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट फोटो एग्जाम में आता है, तो इफ यू वांट यू कैन लर्न इट अप। ओके, इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू गेट। अब यहाँ पे एक्टिविटी इन्होंने ली, तो एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ प्लॉटेड प्लांट एंड variegated leaves, for example money plant or crotons. Keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch gets used up. Now keep the plant in sunlight for about 6 hours. Pluck a leaf from the plant, mark the green area in it, trace them on a sheet of paper, dip the leaf in a boiling water for a few minutes. After this, immerse it in a beaker containing alcohol. Carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil. What happens to the color of the leaf? What is the color of the solution? Now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes. Take out the leaf and rinse off the iodine solution. Observe the color of the leaf and compare this with the tracing of the leaf done in the beginning. What can you conclude about the presence of starch in the various stages of leaf? तो ये दो एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें की कलर ग्रीन होती है, बाद में इसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं, इसकी कलर ब्लू हो जाती है, तो क्या ऑब्जर्वेशन होता है ये हमें इसको बताना है। सो वी कैन टेक इट एज एग्जांपल, और इसको हम चाहें तो इसके बारे में अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। So the time is 10:41. I'm still left with just 15 minutes, so I'll try to cover it up a little faster. So now let us study the plant obtains carbon dioxide. In class 9, we had talked about stomata, which are tiny process present on the surface of the leaves. Massive amount of gaseous exchange take place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis, but it is important to note here that exchange of gas occurs across the surface of stem, roots, and leaf as well. Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores, but it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of the pore is a function of the guard cell. The guard cells swell when water flow into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes, the guard cells shrink. जब पानी ज़्यादा है तो खुल जाता है पोर्शन, और जैसे ही पानी अंदर जाता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ये इसको बंद कर लेता है। सो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। अब एक एक्टिविटी और है जहाँ पे two healthy plotted plants which are nearly the same size, keep them in the dark room for 3 years. Now place each plant in the separate glass plates. Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plants. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. Cover both plants with separate ball jars as shown. Use Vaseline to seal the bottom of the jars with the glass plates to keep them up. Keep the plants in the sunlight for about 2 hours. Pluck the leaf from each plant and check for presence of starch
As an above activity, do both the leaf source presence in the same amount of starch? What can you conclude from this activity? तो ये है, इस experiment को भी आप घर पे कर सकते हैं. Based on the two activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? So far, we have talked about how autotrophs meet their energy requirement, but they also need other raw materials for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in the terrestrial plants. Other materials like nitrogen, phosphorus, iron, and magnesium are taken up from the soil. Nitrogen is an essential element used in synthesis of proteins and other compounds. Thus, is taken up in the form of inorganic nitrates or nitrates or takes up as organic compound which have been prepared by bacteria from the atmosphere. तो ये सॉइल से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, सॉइल से इनको पानी मिलता है, सनलाइट धूप से मिलता है, और इस प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं. I need to get a stylus to write it down. Anyway, I'll get it later on. चलिए अब heterotrophic nutrition देखते हैं. Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending upon the type and availability of food materials as well as how it is obtained by the organism. For example, whether the food source is stationary such as gas or mobile such as deer would allow for difference in how the food exists and what is the nutritive aperture used by the cow and the lion. These is a range of strategies by which food is some organisms break down the food materials outside the body and then absorb it. Examples are fungi like bread, molds, yeast, and mushroom. Others take in the whole material and break it down inside their bodies. What can be taken and broken down depends upon the body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from the plants and animals without killing them. This parasite nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like cactus, amarbale, पिकलाइज लीच एंड टेपवर्म्स. तो ये सारे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल जू, पता है आपको, जो बालों में होते हैं, रिमेंबर. सो माय मॉम यूज्ड टू गेट दोस, जू या कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, तो वो क्या करता है, हमारा खून पीता है सर का, लेकिन वो जिंदा रहता है बट विदाउट किलिंग इट. तो ये हेटरोट्रॉपिक है जो दूसरे पे डिपेंड होता है. सो हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? Since the food and the way it is often differ, the digestive system is different in various organisms. In single cell organism, so food may be taken by the entire surface, but as the complexity of organism increases, different parts become specialized to perform different function. For example, amoeba takes in the food using the temporary finger-like extension ye wala hai, of the cell surface, which fuse over the food particles, performing a food vacuoles. Inside the food vacuoles, complex substances are broken down into simpler ones. When they diffuse into the cytoplasm, the remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out in पैरामीशियम इसको कह लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो. Which is also a unicellular organism. The cell has a definite shape and food is taken up in at a specific spot. Food is moved to the spot by the movement of the cilia, which moves further entire surface of the cell. तो ये कुछ terms है जो आपको याद करने हैं. This is how amoeba and paramecium they obtain their nutrition. Nutrition in the human body. Human body का कुछ अलग है, different. The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus. We can see that the tube has different paths. Various regions are specialized to perform different functions. What happens to the food once it enters our body? We shall discuss this process over here. तो एक activity दिया गया है. We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. Since the lining of the canal is soft, the food is also wetted to make its passage smooth. When we eat something, we like our mouth waters. This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary glands. Another aspect of the food we ingest is the complex nature. It is to be absorbed from the alimentary canal. It has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of biological catalyst called enzymes. The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is complex molecules, to give simple sugar. The food is mixed throughout with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. It is necessary to move the food in a regular manner along with the digestive juice so that it can be processed properly in each part. The lining of a canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movements occur along all the gut. From the mouth, the food is taken to the stomach, to the food pipe or esophagus. The stomach is a large organ which expands when the food enters it. The muscular walls of the stomach helps in mixing the food throughout with more digestive juices. The digestion in the stomach is taken care by the gastric glands present in the wall of the stomach. These release hydrochloric acid, a protein digestive enzyme called pepsin, and mucus. The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of the enzymes pepsin
What other function do you think is served by the acid? The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal conditions. We have often heard adult complexity about acidity can be related through what has been discussed above. The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter's muscle which release it in small amount in the small intestine. From the stomach, the food now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal, which is filtered into a compact space because of extensive coiling. The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. Herbivores eating grass needs a long small intestine to allow the cellulose to be digested. Meat is easier to digest, hence carnivores like tigers have a shorter small intestine. The small intestine is the site of the complete digestion of the carbohydrate, protein, and fats. It receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose. The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act. Bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on the fats. Fats are present in the intestine in the form of large globules, which make it difficult for enzymes to act on them. Bile salt breaks them down into small globules, increasing the efficiency of enzyme actions. The smaller is the emulsifying action of soap on a dirt that we have learned about in the chapter 4. The pancreas secretes pancreatic juice, which contains enzymes like trypsin and digestive protein and lipase for breaking down emulsified fats. The walls of the small intestine contains glands which secretes intestinal juice. The enzyme presents and finally convert the protein to amino acids, complex carbohydrates into glucose, and fats into fatty acid and glycerol. Digested food is taken up by the walls of the intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi, which increases the surface area for absorption. The villi are richly supplied with the blood vessels, which takes absorbs food through each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up a new tissue, and repair of old tissues. The unabsorbed food is sent into the large intestine where the wall absorbs more water from this material. The rest of the material is removed from the body via anus. The exit of this waste material is regulated by anal sphincters. तो dental caries के बारे में यहाँ पे लिखा गया है and this is some question. So since this is a very big chapter, I think we have just covered half of it and I have to leave now. So I'm leaving it up to here. नेक्स्ट जब हम आगे बात करेंगे तो विल हैव इन डिटेल लाइन बाय लाइन एनालिसिस की कैसे है तो अप टू हमने क्वेश्चन पेज नंबर 100 कर लिया है वी हैव कंप्लीटेड 100 पेज तो 100 के बाद जो है हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे और रेस्पिरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग फ्रॉम respiration. So cool, dear students. That's it for now. आप इसको पढ़ते रहिए डिटेल में. If you don't have time, you can just plug in your earphones and listen to the audio that I've spoken to. तो line by line कम से कम आप सुनेंगे तो दिमाग में आपके आइडिया रहेगा. And that way you don't have to study the book line by line yourself. Cool. That's it. Take care of you. Stay safe and keep reading. Keep enjoying your life. Thank you.